Financial planning isn't just about where to invest, it's about why. And often that why begins with your goals retirement, education, or simply peace of mind. But even goal driven investors sometimes get stuck on one asset class or overwhelmed by too many options. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we explore diversification and clarity in a goal-driven financial journey. Today we're joined by Mr. Nikhil Thakkar, director at We Care Freedom Wealth, a firm that seeks to guide individuals and families through their financial journeys with empathy, education, and long-term vision. With deep experience in goal-based planning and financial literacy, Nikhil brings a human lens to topics like diversification, connecting investment choices to life outcomes. In this conversation, he helps us understand how different asset classes can work together and how a multi-asset approach can aim to simplify the journey and not complicate it. Let's begin. Hi everyone and welcome to Grow AMC. Today we'll be talking about diversification and clarity in a goal-driven financial journey. और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट निखिल ठक्कर. Hi Nikhil and welcome to Grow AMC. Hello. Thank you so much for giving me this opportunity. Likewise, it's great to have you on board. तो सबसे पहले बात करते हैं जब कोई अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होते हैं, especially for families with long-term goals. How do you think about the role of different asset classes in that? So definitely this is a very good question. Let us understand this in a very simple way. So if a director is going to produce a movie, and in that movie, there is a need of hero. In that movie, there is a need of mother. And there are different characters. Comedian होता है. तो पर्पस क्या होता है फैमिली का और उस पर्पस के हिसाब से हर एक जैसे असेट क्लास का रोल है. So each and every asset class has different roles, and I think all the roles will play a very important role. All the asset class will play a very important role in designing a family's portfolio, where equity, gold, debt, silver, other commodities will also play a very important role in designing a portfolio. So this is what we keep in mind. And we always keep in mind the end result, that is the end goal of our investors, family purpose जो उनका होता है, उसको हम ध्यान में रखते हैं. तो in your conversations, does diversification naturally come up? आमतौर पे जब आप किसी क्लाइंट से या इन्वेस्टर से बात करते हैं और या फिर आपको लगता है कि इट्स यू जो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कॉन्वर्सेशंस में लाने की कोशिश करते हैं, एंड हाउ डू यू कनेक्ट इट बैक टू द रियल लाइफ गोल्स पॉइंट? So diversification is definitely one thing which normally investor never think of it. So what we do is we have created a model where the investor will be having his real estate as an investment, land as an investment, gold as an investment. So we always try to dig out all those things, and from that we will be able to understand that what kind of thought process investor is having. Is he having a very secured mindset? Is he having a very low risk profile? So वो asset allocation जब निकालते हैं, out of which we will be able to understand that what kind of returns he is generating on his overall portfolio. तो उनके जो 100 रुपए invested है वो कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है. एंड दिस इज समथिंग विच वी डेफिनेटली इंटरफियर, वी डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स माइंड एंड टू चेक आउट हिज पोर्टफोलियो एंड रिस्क टॉलरेंस, एंड अकॉर्डिंगली वी डिजाइन दिस डाइवर्सिफिकेशन. वी ऑलवेज गिव हिम इम्पोर्टेंस, क्योंकि होता क्या है, वन सेकेंड जो एनालॉजी है मूवी मेकिंग की, उसी एनालॉजी को हम ध्यान में रखते हैं. तो हर बार लेट्स से हर बार एक ही टाइप का हीरो हर मूवी में नहीं चलेगा. सो इफ इट इज अ कॉमेडी मूवी वी नीड टू ब्रिंग सम अनदर हीरो. इफ इट इज एन एक्शन मूवी देयर विल बी अ डिफरेंट हीरो. तो हर बार एक ही हीरो कास्ट नहीं होगा. सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ पोर्टफोलियो टू द एज पर द प्लानिंग ऑफ द फैमिली और गोल ऑफ द फैमिली. ओके, गॉट इट. बट आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से बिहेवियरल पैटर्न्स है विच लीड इन्वेस्टर्स टू ओवर रिलाई ऑन वन एसेट क्लास, जबकि उनके जो गोल्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि और ज्यादा की हो? I think this is very important because हर बार investors are having one kind of behavior. तो जब बाजार में कुछ रिटर्न्स आ जाते हैं तो इन्वेस्टर टेंड टू फॉलो दिस, और उसके ऊपर देयर आर सो मच ऑफ सोशल मीडिया, सो मच ऑफ कंफ्यूजन. तो ये सब चीजों की वजह से इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि आई एम देयर इज अ फोमो बिहेवियर,
Then there is one more behavior, that is like syndrome of I have familiarity with this particular asset class. Then there are people who are at one age but they have never taken any kind of risk in equity. So such kind of behavior we have seen in our investors. एक और हम लोगों ने देखा है, दैट इज कंफर्ट जोन, मतलब उनको दे डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ लॉस अवर्जन. सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सी. So in that case, definitely this behavioral biases are there, which we need to discuss with our investors, and then we have to break it out. So I think that helps us in making. So generally होता क्या है, one more analogy I am introducing over here, that is, let's say in any bathroom when you enter for a shower, तो आप राइट साइड करोगे तो गर्म ही आएगा और राइट साइड पे कोल्ड आ रहा है. बट यहाँ पे जो मिक्सचर है राइट असेट एलोकेशन का, कि एडिक्वेट कोल्ड वाटर, कंफर्टेबल वाटर होना चाहिए, तो दैट मिक्सचर जो काम करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर वर्किंग एज एन व्हाट आवर रोल इज, वी हैव टू वर्क एज अ मिक्सचर इन डिजाइनिंग दिस ओवरऑल असेट क्लास ऑफ आवर इन्वेस्टर्स. अगर हम बायसेस के बियॉन्ड भी देखें तो आज की डेट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, नैरेटिव्स हैं, जो इजीली एक्सेसिबल हैं मोस्ट पीपल के लिए. सो डू यू थिंक डाइवर्सिफिकेशन नाउ फील्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट नीड्स टू बी? Definitely, because different cycles are running out. In last 5 years, let's say post-COVID, what we have seen, at one junction, equity has given returns, so people will think of equity. Another junction, gold has given returns, people will start thinking of gold. Now silver has started giving returns. तो हर बार इतने सारे ऑप्शंस है, उसके ऊपर से बहुत सारे एडवाइजर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे हु विल मेक पीपल कंफ्यूज. तो हर चीज में इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स है दैट इन्वेस्टर विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज्ड, and in this confusion he will end up at a wrong decision. And this is one major error which investors can create, that is, आप सोचिए कि when somebody starting at 40 for his retirement, तो 20 साल में he has to achieve his retirement goal, और उसमें 5 साल 6 साल लेट से कोई गलत जगह पे चला गया, या he opted for a wrong, he took a wrong decision, then that will be a big failure for that investor. So all these alternatives are available, so much of social media is available, so much of influencers are over there, and which creates definitely confusion in the mind of investor and will not lead them to a right position or right decision. All right. But ऐसे में how can a multi-asset approach bring more clarity to investors, especially जिन्हें outcomes पे focus करना है, सिर्फ options पे नहीं? So continuing with the second analogy of having a comfortable water in the shower, so right mix of hot and cold water. So that is something very important. So whatever will be there, whatever is there, the investor goal should be achieved. Where multi-asset kind of theme as well as multi-asset will help, because कभी कभी होता क्या है, हर बार सारे हीरो नहीं चलता है, बट जब कोई एक हीरो नहीं चलता है तो दूसरा चल जाता है. All these things can happen, but provided one most important thing is right asset allocation, right mix, and where a professional approach is very important, where automation is very important, so and where the system and processes are very important. Very rightly said, and thank you so much, Nikhil, डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए. It was great chatting with you. Awesome. Thank you so much. As Mr. Nikhil Thakkar shared, the real value of diversification lies in how it connects your life, not just your portfolio. Equity, debt, and gold all serve different purposes, and when combined thoughtfully, they can help create a strategy that seeks to support long-term goals without getting caught up in short-term noise. That's what the Grow Multi-Asset Allocation Fund seeks to offer. A single portfolio that invests across equity, debt, and commodities like gold and silver. It aims to give investors an approach that brings structure to diversification while still staying focused on real-life outcomes. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because when your money is structured around your life, not just the markets, it becomes easier to move forward with clarity. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.